ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ +3 5th ସେମିଷ୍ଟାର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର କୋର୍ କୋର୍ସ 11ର ୟୁନିଟ୍ 4 ଯାହାକି ଜେସ୍ ମିଲ୍ ଏଣ୍ଡ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ବା ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ଆଉ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର जो चैप्टरटी तार समस्त इंपोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन मैं आपन साथ डिस्कशन करबी। आ पूर्व मध्ये मैं 1 2 3 ऑलरेडी वीडियो बन सारछि, जो माने देखि नै से देखि परिबे। आ वीडियो लास्ट रे मैं आपन मन कहबी जे आपन नोट्स टी किपरि भाबे पाई परिबे बा डाउनलोड कर परिबे पीडीएफ टी को। तो चलନ୍ତୁ स्टार्ट करिबा। तो फर्स्ट टाइम देखिबा व्हेन एंड वेयर डिड जेस मिल बॉर्न। जेस स्टुअर्ट मिल वाज बॉर्न इन 1806 इन इंग्लैंड। 1806 रे इंग्लैंड जन्म करथिले। आ ताकर किछि हम पूर्व मध्ये जो वीडियो देखिथिबे जे समस्त किछि ना किछि फैक्टर इन्फ्लुएंस करछि। तो ठीक सेही परि जेस मिल को मध्ये किछि फैक्टर जहाकि तांको प्रभावित करछि। तो मिल वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ फादर जेम्स मिल एंड बेंथम। ही also was also influenced by dialogues and dialectic method of Plato in the writing of the Coleridge and Wordsworth. Above all, तो वर्ड्सवर्थ आप जान पाथे इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ तांकर पोएट मध्ये हमर जेस मिल को इन्फ्लुएंस करछि। एबव ऑल हिज वन वाइफ मिसेस टाइलर आल्सो ग्रेटली स्टिमुलेट हिम। तो ये सब फैक्टर था जहां द्वारा कि जेस मिल को इन्फ्लुएंस ले। व्हाट आर द राइटिंग ऑफ अज मिल। तो द मेन राइटिंग ऑफ मिल आर अज फॉलो। तो राइटिंग जहां रही था आपण भले मन रखिथांतु तार माने तारीख सहित मसिया सहित कहीं ना परीक्षा आसीबो ए गुडी को 1 मास रे कि 2 मास आसीबो। ऑन लिबर्टी 1859 एडी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 80। कंसल्टेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1860। तो हेत किछि इंपोर्टेंट राइटिंग थिला। राइट मिल्स व्यू ऑन यूटिलिटेरिज्म। तो मिल हैड बोरोड द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म फ्रॉम बेंथम। तो बेंथम को ठू से बोरो करछंती यूटिलिटेरियनिज्म को। बट इन लेटर इयर्स ही मेड मॉडिफिकेशन इन द प्रिंसिपल। किंतु तापर से किछि परिवर्तन आनछन मॉडिफिकेशन करछंती। According to मिल को हिसाब रे it was the collective pleasure which gave maximum happiness. It also asserted that pleasure difference in quality. He should prefer a smaller amount of superior pleasure to a large quantity of lower quality of pleasure. Discuss Mill's view on liberty. The Mill was a great champion of the individual liberty. He stood for restricting government interference in the life of the individual to minimum possible. He argued that individuals should left free to provide variety. Next देखिबा write the criticism of Mill's view on liberty. So his doctrine applies only to human being in the maturity of the faculties, not to children. He also refuses liberty to backward peoples. This is unjust. It is imperative to give the ultimate freedom to the individual in the sphere of action as in the domain of thinking. The free play of individual is likely to give rise to inequality among men. तो इतला किछि क्रिटिसिज्म मिल करो। What was Mill's view on state? तो Mill considered the state as a product of the will of people who compose it. It is also an instrument for the promotion of their interest. He asserted that the state interference in indiscernible for the development of individual personality. Discuss Mill's view on representative government. तो Mill's को representative government view कौन रही? Mill considered the representative government as the best government. Mill कहले जे जो representative government था से was best government. It was a means of bringing the general standard of intelligence and honesty existing in the society or community. It also more directly to bear upon the government and investing them with greater influence on it. Right about criticism of Mill's representative government. तो सबुर किछि कोन गोटे जिंस कि कोन कहले तार किछि समालोचना हुए। तो जो माने कि चाहउछन्ते जे जो रहिछन्ते हमर फिलोसोफर माने तांकर जो थॉट को किंबा से जो पॉइंट ऑफ व्यू को कोई माने क्रिटिसिज्म करंती जो जानि जानि ताहाले कमेंट जणांतु क्रिटिसिज्म ताहाले मु ताहा वीडियो आनिबे। जे सब जो फिलोसोफर थांती तांकर थॉट को तांकर आइडिया को तांकर थिंकिंग को केउ माने सब क्रिटिसिज्म करथांती। जेपर कि ओपन वोटिंग इज नॉट ऑलवेज सुटेबल. Proportional representation is quite complex and should not applicable for small political parties. There should be restriction voting. तो किछि क्रिटिसिज्म थिला
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आम जानते रिप्रेजेंट मैंने निश्चय भोटिंग करा पड़े तो भोटिंग को लेकिन किसम थिला व्हाट इज द सजेशन मेड बाय मिल टू ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी right to vote to all without distinctions. He advocated the proportional representation to ensure that each section of society get representation in proportion to its voting strength. He advocated for open voting. Discuss Mill's idea on women. तो मिल्स फेवर्ड फॉर इक्वाल ट्रिटमेंट ऑफ वुमेन विथ मेन तो से मते कहले जे पुरुष को नारी को समस्त कोन इक्वाल ट्रिटमेंट मिले आवश्यक ही एडवोकेटेड टू ग्रांट फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रीडम टू वुमेन so that the differences between the men and women can be minimized. He argue for similar position of women with men. तो से कहले जे मनुष्य जो अछन हम समान तो से तेनु करी पुरुष महिला समान से माने उभय इक्वाली ट्रीटमेंट आवश्यक जदि से माने इक्वाल ट्रीटमेंट माने हेबे ताहाले जाय कि जो मेन पुरुष और महिला भेदभाव दूर हम माने ताको हम कमे परिबा आ समाज रे गोटे समान पोजीशन तयारी हबो explain Jasmine as a Democrat. Mill is considered as a true Democrat for his views on advocacy of restricted adult franchise. Weight is in voting for educated and fortified classes. He believed that democracy alone could give pleasure and happiness to the people. से विशेष कर जे गणतंत्र नि लोक मानको खुशी दबो. Discuss Mill's view on individualism. He strongly opposed all state interference on the ground of the hindrance that individual liberty. He also laid importance on the state for that help the development of individual personality. He defended the institution of private property and considered it necessary for good and progress of mankind. Write about the contribution of Mill. The Mill is contribution kono na he is more analytical than synthetic. He is the foremost individualistic who emphasized the principle of human progress. He was also great utilitarianism. तो यूटिलिटेरियन जानते यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट टाको मिल बेंथम को आनी बर कर ओके तो मन रखी था पर आसपारे 1 मार्क्स रे नेक्स्ट टाइम देखिए कार्ल मार्क्स को ऊपर तो कार्ल मार्क्स वाज बोर्न केबे क्यों जन्मग्रहण करथिले ना कार्ल मार्क्स वाज बोर्न 1818 द रेहनलैंड इन जर्मनी 1818 रे कार्ल मार्क्स जन्मग्रहण करथिले हम जानछन्ती कार्ल मार्क्स जी नो अछु मार्क्स थ्योरी ताने देथिले तांगर पूरा फेमस हेतला परे तांको मार्क्सिज्म को जाना जाए कार्ल मार्क्स बोली तो व्हाट वर द सोर्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्स मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो फ्रांस विप्लव से बहुत प्रभावित होतिले ही वाज आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेगल इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड फ्रेंच थिंकर्स हिज फ्रेंच फ्राइडरिच एंजल्स आल्सो हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन हिम द पॉल टाइम्स माने फ्राइडरिच एंजल्स आउ मार्क्स बेसिकली मार्क्सिज्म को डिस्कवर करेंगे ओके मन रखी था ये सब इंटरलिंक अटे राइट अबाउट सम ऑफ इंपोर्टेंट राइटिंग ऑफ कार्ल मार्क्स तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 डास कैपिटल 1867 क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 तो ये सब इंपोर्टेंट राइटिंग मन रखता समस्त जी सब पिले सब कहीं परीक्षा निश्चय आसो 1 मार्क्स क्वेश्चन एथिरे आसे राइट ए नोट्स ऑन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो Communist Manifesto kono the Communist Manifesto was jointly drafted by Marx and Engels in 1848-81 nas asipari मन रखिथांतु it contains the cleanest and most compact statement of Marx on past struggle between economic classes the modern bourgeois proletariat conflict capitalism तो सबूर कॉन्सेप्ट रही जे सेमानक भितर स्ट्रगल किपर हेछि अतीत रे इकोनॉमिक क्लासेस लोक द मॉडर्न bourgeois proletariat कैपिटलिज्म ओके ये सबूर जो कहानी रही मैंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो चाहते पढ़ते कि जब आप चाहते एथपारे मुझे सेपरेट वीडियो बने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उपर कमेंट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते मुझे खूब शीघ्र चेष्टा करी वीडियो बनवाई व्हाट आर द मेजर्स दैट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एडवोकेट्स टू ब्रिंग अबाउट ए ट्रांजैक्शन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू प्रोलेटारियट सोसाइटी द एवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इन लैंड एंड एप्लीकेशन ऑफ द ऑल रेंट्स ऑफ लैंड for public purpose, abolition of inheritance,
The establishment of national banks. What do you mean by dialectical materialism? Now, the dialectical materialism is the foundation of which the entire struggle of Marxian thought rests. Marx borrowed the idealistic philosophy of Hegel and fitted it into his own economic thought to demonstrate the necessity of a class struggle and the inevitability of progress through revolution. Next, what do you mean by historical materialism? Marx's historical materialism is nothing but the actual application of the principle of a dialectical materialism to the development of the society. The form and structure of the society is determined by the condition of the production. The progress of society from one stage to another is the result of a law of history. Next ଦେଖିବା write the criticism of Marx's materialistic interpretation of history. So it ignorance the non-economic factors in the shaping of history. It also does not attach any importance to human passion, emotion, sentiments, and religion. No doubt, the economic factors influence human affairs, but it is certainly wrong to say that they exclusively influence all human actions. तो ये କିଛି criticism ମାର୍କ୍ସଙ୍କର materialistic interpretation of history को ନେଇକି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା what was Marx theory of class war. The Marx theory of class war is a logical corollary of his theory of economic interpretation of history. According to Marx, the theory of all hitherto existing society is the history of class struggle. The society has split clearly into two hostile campaigns, the Borges and proletariat. I'm mentioning Borges and proletariat. I'm first semester रे पढ़िथिबा Borges कोन proletariat कोन, and ultimately it end with the victory of workers. Discuss the criticism of Marx theory of class war. तो Marx theory class war को नहीं कौन सब criticism अच्छी ना. Marx does not offer any clear concept of classes. Marx wrongly assumes that there are two classes in society, but there are number of classes in society. The idea of class struggle is harmful in so far it encourages hatred and violence. Next ଦେଖିବା what was Marx theory of value. According to Marx, the chief determinant of value is labor. He asserted that the value of is a quality which is inherent in a thinking or commodity which is entirely due to the labor. The other factors are rather unimportant and unessential. What is Marx theory of surplus value? So Marx theory of surplus value was the extension of his labor theory. Surplus value is the difference between the exchange value of a manufactured commodity and the amount paid to the workman of his labor. तो surplus value को बुझंतु एटा ଗୋଟେ economic concept. The appropriation of a surplus value by the capitalist constitute the fundamental injustice of the modern industrial system. Discuss about the criticism of Marx theory of surplus value. तो surplus value को ମଧ୍ୟ criticism କରାଯାଇଛି ଯେପରିକି as to proper Marx treated his doctrine of surplus value in a highly abstract way. Labor will also alone create value, but there are also other elements like land, capital and organization. ମାନେ ଲେବର ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇକୋନୋମି ପଢୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦରକାର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲେବର, ମନି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ. ତ ଠିକ ସେହିପରି ଖାଲି ଲେବର ହେଲେ ହବନି, ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦରକାର. Max Beer says that Marx theory of surplus value has a significance only as a political and social slogan rather than as an economic truth. Discuss Marx ideal state. तो मार्क्स को आइडियल स्टेट को नहीं कौन थिला ना. मार्क्स कन्सेप्ट ऑफ द स्टेट as a classical institution. ए वन मार्क्स आसपारे पचारि पारे. मार्क्स कन्सेप्ट ऑफ द स्टेट as a desk institution, classic institution, class institution. ओके मन रखिथाନ୍ତୁ एसବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ वन ମାର୍କ୍ସ କୋଉଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆସେ. It reflects the interest and ideas of the dominant classes. He argued that with the disappearance of capital, the state shall also disappear and a classless and stateless society will emerge. What was Marx's idea on revolution?
According to Marx, the major changes could be brought about only the working classes by organizing themselves through revolution. The ultimate purpose of a revolution is to abolish static and establish a stateless and classless society. Discuss about the contribution of Marx. The Marx contribution ଯେପରିକି scientific approach, realistic description of social life, profound of communist philosophy ତ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା। ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେଥିରେ ସବୁ ବ୍ରିଫ୍ଲି ଦେଖିବା। ଏବେ 2 ମାର୍କ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ 2 ମାର୍କ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ କୋର୍ 11 ଆମେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋର୍ 12 ଆମେ ସବୁ 2 ମାର୍କ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେଉଁମାନେ କି ନୋଟ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେ ଯାଇ ପାଇପାରିବେ। आप वीडियो को शेयर मत करूँ कहीं वीडियो बहुत एफर्ट लगे ये सब वीडियो बनवारे पीडीएफ फाइल बनवारे नोट्स टाइप कर ओके तो शेयर करूँ जहाँद्वारा नोट्स समस्त पहुँची पार आ समस्त स्टडी हेल्पफुल है।